Hello everyone. So today we'll be looking at the background and the motivation of topological dynamics. Okay. So again, this is going to be the very first lecture in this series, and I'm devoting this lecture to just have a look at the history and what led to the birth of this subject, topological dynamics. So in just a second. Yeah. So in 18th 19th century, mathematicians developed various techniques to solve the differential equations, which include Laplace transforms, power series solutions, variation of parameter, linear algebraic methods, etc. मतलब वो सारे मेथड्स जो हमने पढ़ रखे हैं, पर इसमें एक मेजर फ्लॉ था. What was the major flaw in this development? And it was that all of these techniques mainly worked for linear differential equation. ये सारी की सारी टेक्निक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात आपको भी पता होगी कि बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे नेचर में वो लीनियर नहीं होते. दे आर एक्चुअली इनहेरेंटली मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर, राइट. जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं न्यूटन्स की एन बॉडी प्रॉब्लम. यू नो कि न्यूटन की एन बॉडी प्रॉब्लम helps us to understand the motion of planets in the solar system. और इस एन बॉडी प्रॉब्लम में होता क्या है? इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, जो मोशन ऑफ एन पॉइंट मासेस को डिस्क्राइब करती है. अगर आपको उनकी इनिशियल वेलोसिटीज और इनिशियल पोजीशंस पता है तो आप उसकी पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है, पॉइंट मासेस की. सो ओके, सो व्हाट हैपेंड इज, अब देखो, एक दो के लिए अगर ये एंड पॉइंट मास सॉल्व करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट. लेकिन फॉर n strictly greater than 2 the things become formidable. Formidable मतलब ऐसी चीजें जिनको देख के आपको फियर हो, ठीक है. सो उनको सॉल्व करना, वो भी एक्सप्लिसिटली, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्व करना, बट हाउ? explicitly. So actually it is a very difficult task. मतलब आप चलो सॉल्व भी कर लोगे पर आपको एक्सप्लिसिटली चाहिए, क्योंकि यू नीड ना, जब मैं उसमें इनपुट्स डालूं, माई इनिशियल वेलोसिटी एंड माई इनिशियल पोजिशन, इट शुड गिव मी आउटपुट फॉर इट्स करंट पोजिशन, राइट. तो ये कर पाना बहुत मुश्किल था एंड बहुत मैथमेटिशियंस ने ट्राई किया to do so, but ultimately nothing worked. So finally breakthrough tha when in 19th century Poincaré he came up with his qualitative point of view. Okay, so he is also called as the father, he is called as the father of dynamical systems, और टोपोलॉजिकल डायनामिक्स का जन्म डायनामिकल सिस्टम्स के जन्म के बाद ही हुआ था, ठीक है ना. सो दिस इज, so he is basically the father of dynamical system because he was the one who came up with this qualitative point of view. that क्वालिटेटिव मतलब हम उसकी क्वालिटीज पे देखेंगे, इन द सेंस rather than talking about the exact position at a particular time t of a particle, we will be looking at कि
what will be its trajectory when t tends to infinity. Okay, we will be looking at, do they recur? We will be looking at, are there any periodic orbits, or is the मोशन स्टेबल, क्या वो पार्टिकल एस्केप तो नहीं कर जा रहा सिस्टम को. सो हम बेसिकली मतलब rather focusing on quantitative, we will be looking at qualitative, ठीक है, qualitative properties. So now coming on to the topological dynamic part. Okay, so there was a there is this Poincaré recurrence theorem, ठीक है, in 1890s. So it basically says कि एक measure preserving system में at most every point returns arbitrarily close to its initial position. ठीक है. And what is this measure preserving system? It is basically a mathematical model describing the physical processes where a transformation on a space doesn't change its overall size. अब मेजर प्रिजर्विंग सिस्टम्स में तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा होता है कि हर एक पॉइंट आर्बिट्रेरीली क्लोज टू जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ पर आता है, रिटर्न करता है, ठीक है. लेकिन एक नेचुरल क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुआ, एंड दैट वाज द क्वेश्चन कि क्या ये रिकरेंस बिना मेजर के समझी जा सकती है. मान लीजिए मेरे पास मेजर स्पेस नहीं है, ठीक है, उसे मुझे जनरलाइज करना है चीज़ को. लेट्स से मेरे पास वो स्पेस मेजर स्पेस नहीं है, तब भी क्या मैं इन चीज़ों को समझ सकती हूँ. सो इसका आंसर था यस. ओके, एंड इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बिरकॉफ, which is called as the founder of the topological dynamics. And what he did, he came up with this idea that we can replace measure space by topological space and measure preserving maps by continuous maps. And these are the self maps which you will be studying over here. Okay, ये आप देखोगे, these are actually the self maps. Okay, so he told us that dynamics can be studied using topology alone without smoothness or measure अगर नहीं भी है तब भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं टोपोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है. एंड हियर this led to the birth of topological dynamics. All right, so here we end this lecture. Hope you liked it.